Hello, my dear YouTube friends. Today I am having a very good news. My YouTube channel reached a subscribers of 100 on YouTube. Although this is not a very big milestone, but yeah, it is very big for a beginner like me. Thank you for all your immense love and support. Thank you for liking, for sharing, for subscribing my YouTube channel, for my liking my videos, and I'll keep working upon these, and I'll try my best to raise this number to such a good value, which everybody used to everybody used to think that this should be the milestone. So I'll try my best. Okay, so today we are starting with a very beautiful question, very amazing question from GATE 2015, Shed 2 Civil Engineering, and this is a very beautiful question that is belonging to the topic matrices and determinants. And this question is basically pertaining to that of the eigenvalues. So let's discuss. This question is basically belonging to matrices and determinants. That is a topic of engineering mathematics, and that is belonging to or pertaining to the eigenvalues. And गाइज ये क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा, इसका आंसर सोल्यूशन सब बताऊंगा, बट एट लास्ट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस क्वेश्चन पे ही एक ट्विस्ट मैंने बना रखा है। एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया है और कुछ वैल्यूज उसमें ऐड की है, कुछ सब्ट्रैक्ट की है, एंड कुछ अलग सा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। जस्ट गिव अ ट्राई टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड होप यू विल लाइक दैट ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस दिस वन फर्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन में बोल रखा है कि द टू आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिसेस, दिस इज द मैट्रिक्स, से दिस इज द मैट्रिक्स A, which is having definitely the order of the matrix is, it is a 2 by 2 matrix, so we can say that it will have two eigen values. If both real, then both real, and if one complex, then the other has to be complex, conjugate roots like that, so 2 1 1 p. Okay, and they are saying that the ratio of the two eigen values, जो इस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज हैं, उनका जो रेशियो है दैट इज 3:1, राइट। मतलब ग्रेटर जो आइगन वैल्यू है, अगर वो लैम्डा 1 है, स्मॉलर अगर लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3. And this is saying that for p is equal to 2, the ratio of the eigenvalues is this. Means if the value of p is 2, then the ratio of the eigenvalues is 3:1. Then they are asking what is the another value of p for which the eigenvalues have the same ratio of 3:1. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 1 1 और p। इन्होंने बोल रखा है कि p की दो वैल्यूज के लिए जो आइगन वैल्यूज का रेशियो है इस मैट्रिक्स का, वो सेम आ रहा है। yes, for two different values of p we are getting the same ratio of the eigen values. एक p की वैल्यू 2 है, मतलब एक p की वैल्यू 2 के लिए उसका रेशियो 3/1 है, तो वो दूसरी p की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इसका रेशियो अगेन 3/1 ही आएगा। रेशियो 3/1 है गाइज, प्लीज try to understand that ratio is 3/1, not the eigenvalue is 3 and other is 1. The ratio is 3/1. Eigenvalues can be anything, it will be multiple of 3/1 now, so it can be anything, but the ratio is after cutting the ratio is 3/1. So we have to find that second value of p for which the ratio will remain same, 3/1. Okay, so how to proceed? So firstly we will say that let us assume that lambda 1 and lambda 2 are two eigenvalues of the given matrix A equals 2 1 1 p, such that, you need to mention this, such that lambda 1 is greater than lambda 2. Fine. Now this is the matrix. Now you know that the sum of the eigenvalues, we are having two important properties of the eigenvalues. The first says that the sum of the eigenvalues of a matrix, here lambda 1 plus lambda 2, this is equal to the sum of the diagonal elements, leading diagonal elements of the matrix, or we can say that trace of the matrix.
trace of the matrix means the sum of the diagonal elements. Here a diagonal elements in this matrix is 2 and p because they are along the diagonal only. Na? So 2 that is a11 and p that is a22. So these are the diagonal elements. So this is equal to a11 plus a22 that is 2 plus p. So we are having one equation that is lambda 1 plus lambda 2 equals to 2 plus p, right? Secondly, what we can say that? Secondly, we can say that the product of the eigenvalues, that means lambda 1 into lambda 2 is equal to determinant of the matrix. Okay, you take the mod of this particular matrix, determinant of this matrix, whatever the determinant you get, that is basically the product of the eigenvalues of a matrix. So that is equal to, determinant is equal to 2 into p minus 1 ka square, that is 2p minus 1. So we are having lambda 1 into lambda 2 is 2p minus 1. Now it is further mentioned you in the question that the ratio of the bigger by smaller eigenvalue is 3 by 1. So from here you can say that lambda 1 is 3 times of lambda 2. Crystal clear? Okay. Now we are having lambda 1 is equal to 3 times of lambda 2. So we will substitute this particular value of lambda 1 in both the equations. Like we are having the first equation as lambda 1 plus lambda 2 is equal to 2 plus p. So substitute the value of lambda 1 here. So you will get 3 times of lambda 2 is 2 plus p. From here you will get lambda 2, sorry, 3 times of lambda 2. Again this is lambda 2 यहाँ पे पहले से भी है ना. So this is lambda 2 plus 3 times of lambda 2. That means we can say 4 lambda 2 is 2 plus p. From here you can say that p is equal to, or we can say lambda 2 is equal to, because we finally want to calculate the value of p only na. So lambda 2 is equal to 2 plus p divided by 4. Okay. We are having the second equation, lambda 1 into lambda 2 is 2p minus 1. Again substitute the value of this lambda 1 here. So you can say that 3 into lambda 2 is equal to 2p minus 1. This means 3 lambda 2 square equals to 2p minus 1, right? Now substitute this particular value of lambda 2 here. So you will get 3 2 plus p divided by 4 ka whole square is equal to 2p minus 1. Now you just open this expression and solve for this. You will get 4 plus p square plus 2 2s are 4p. 4 ka square 16, multiply this side, so it will become 32p minus 16. So this will become 12 plus 3p square plus 12p is equal to 32p minus 16. That means 3p square minus of 20p plus, if you add this 3 4s are 12 and plus 16, it will become how much? It will become 6 2 8 1 1 28 equals to 0. So this is the final expression. What we have did, this is crystal clear, I think. That is 2 plus p by 4, then squared, 2 2s are 4, p square plus 2 2s are 4p, 4 4s are 16 to the 32 minus of 16, and then 16, we will add this particular side, 3 4s are 12 plus 16, that is equal to 28, and this is the final expression. Now value of p, one value of p is given to you as p is equal to 2. If I am not wrong, then one value of p is already given to you as that is equal to 2, right? In the question itself, yeah, p is equal to 2. So we know that for a particular quadratic equation, the sum of the roots is basically equals to what? If the roots of equation is alpha plus beta, then alpha plus beta is equal to minus of b by a. Here b is 20, a is 3. So alpha plus beta is basically equals to minus of minus 20, it will become plus 20. So it will become 20 divided by 3. So from here, you know that it will have two values of p, say p1 and p2. One value of p is 2. So other value will be p dash plus this 2. This is basically equals to how much? 20 divided by 3. Okay, so from here you can say that, if I do it here, from here you can say that p dash is equal to 20 by 3 minus 2. So it is 20 minus 6 divided by 3. So p dash is equal to 14 by 3. So this is the another value of p for which we are having the same ratio of eigenvalues lambda 1 by lambda 2 equals to 3:1. Okay.
So what's the answer here? The answer is 14/3. It's D. Okay, that's D. Now I have already said you in the starting of the video, in the beginning of the video only, that I am having a simple twist type question at the end of this particular video, which I am going to discuss with you all, and it also involves the use of some basic properties of the eigenvalues. So let's jump to that question. And yes, we are using the same parameters given in this particular question. Basically that question is an extension of this question. So here is this twist question, or we can say beautiful extension of that particular amusing question of that matrix one. It says कि if for the same eigenvalues of the matrix, means we are having that matrix A, if for the same eigenvalues of the matrix मतलब lambda 1 और lambda 2 के लिए, if the eigenvalues of matrix A square plus A inverse are A and B, मतलब एक ऑपरेशन हमने A पे परफॉर्म किया, दैट इज A स्क्वायर प्लस A इनवर्स, इसके जो आइगन वैल्यूज निकल के आ रहे हैं वो A एंड B हैं, और आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का स्क्वायर C और D है, देन वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. और यहाँ पे कुछ बोल रखा है कि अज्यूम मैट्रिक्स ए इज फॉर्म्ड फॉर पी इज इक्वल टू 2. मैंने आपको बोला था ना कि पी की वैल्यूज जो आएगी, दो वैल्यूज 2 आई थी और एक 14/3 आई थी, तो उन दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो वहाँ पे सेम आ रहा था. तो इसलिए यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको p इज इक्वल टू 2 के लिए मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और उसी पे ये ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, नॉट फॉर p इज इक्वल टू 14/3. अदरवाइज अगर आपको ये मेंशन नहीं करेगा तो यू विल बी कंफ्यूज ना कि कौन सी p के वैल्यू के लिए हम लोग लेंगे, भाई p इज इक्वल टू 2 लेंगे या p इज इक्वल टू 14/3 लेंगे, तो वी हैव टू गो फॉर p इज इक्वल टू 2 ओनली. और यहाँ पे ये भी मैंशन कर रखा है कि जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी है और जो c की वैल्यू है डेट इज स्मॉलर दैन d. ओके, तो ये एक MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है. इस पे एक भी करेक्ट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं. सो नेवर नो. सो लेट्स प्रोसीड. ओके, सो मैट्रिक्स क्या आई थी हमारे पास? पहली जो मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, दिस इज 2 1 1 एंड p. हमें बोल रखा है वी हैव टू फ्रेम फॉर p इज इक्वल टू 2, सो वी विल सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू 2, सो इट विल बिकम 2 1 1 एंड 2. You can see this particular matrix is a symmetric matrix. Aij is equal to Aji, like, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमें कोई. चलो ये हो गया. अब उसके बाद से ये मैट्रिक्स फ्रेम हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले हमें बोल रखा था ना कि लैम्डा 1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 है, और दो इक्वेशंस हमारे पास आई थी. एक आया था लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस पी, और एक आया था लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज 2p माइनस 1. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ से गाइज आप p इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. और आपको बोल रखा है लैम्डा 1 इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इज 4. दैट मीन्स 4 लैम्डा 2 इज 4. दैट मीन्स लैम्डा 2 इज 1. एक आइगन वैल्यू आ गया आपके पास 1. दूसरी क्या हो जाएगी? लैम्डा 1 इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 3. और गाइज सेकेंड आप ये स्पेसिफाई कर लेना कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है सेकेंड वाली, यानी क्योंकि हमने ये वैल्यूज इन दोनों की मदद से निकाली है. सो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट लैम्डा 1 इज 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, एंड 2p माइनस 1 इज 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3. यानी कि सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सही है. यानी कि एक लैम्डा 1 जो है वो 3 है, और पहले क्वेश्चन में आपको बोला था ना लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 3 है, यानी कि लैम्डा 1 की वैल्यू है 3 और लैम्डा 2 की वैल्यू है 1. क्लियर? ओके, ठीक है. तो अब हमारा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं. अब हमें बोल रखा है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स दैट इज ए एंड बी, जहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है, और इस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज निकल के आ रहे हैं दे आर सी एंड डी, जहाँ पे सी की वैल्यू डी से छोटी है, बड़ी नहीं छोटी है. ओके, तो आपको पता होगा कि अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होता है. सिमिलरली ए इनवर्स का आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा होता है, और सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर बहुत क्वेश्चंस फ्रेम कर चुका है अभी तक गेट में या जेई में, एंड दिस इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द आइगन वैल्यूज. ओके, a lambda then a square lambda square. अगर a क्यूब है तो it will become lambda cube. In general a raised to power n का eigen value lambda raised to power n, where lambda is the eigen value of matrix A. A inverse is 1 upon lambda, and eigen value of adjoint of A is determinant of A divided by lambda.
ओके, तो पहला वाला करते हैं हम। पहला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले हम करेंगे फॉर लैम्डा 1 इक्वल्स टू 3 के लिए, पहले 3 के लिए कर लेते हैं। तो अगर 3 के लिए पहले हम करेंगे तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ए इनवर्स का आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा यानी कि 1/3, ये हो जाएगा 9 + 1/3 यानी कि 27 + 1/3 यानी कि 28/3। फिर हम करेंगे फॉर लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 जो कि 1 ही होता है का स्क्वायर, नॉट स्क्वायर ओनली 1, इज इक्वल टू 1 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे आपको बोल रखा है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो a की वैल्यू ऑब्वियसली 28/3 होगी और b की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, यानी कि a इज इक्वल टू 28/3 एंड b इज इक्वल टू 2। ये निकल गया, फाइन। अब दूसरा, नाउ वी विल डू फॉर द एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमें वैल्यूज़ मिल चुकी थी, लैम्डा 1 की 3 मिली थी और लैम्डा 2 की 1 मिली थी। तो फर्स्टली वी विल सॉल्व फॉर लैम्डा 1 इक्वल्स टू 3 के लिए करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। मॉड ऑफ ए वॉज 2p - 1 डिवाइडेड बाई 3, p की वैल्यू 2 थी, 2 - 1/3, 4 - 1/3, 3/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके, लेकिन आपको पूछ रखा है एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी कि उसकी आइगन वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। सेकेंड वी हैव टू डू फॉर, सेकेंड वन वी हैव टू डू फॉर लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1। सो एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1, 4 - 1/1, 3/1 यानी कि 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आपको बोल रखा था कि दैट वैल्यू ऑफ सी हैज़ टू बी लेस देन डी, तो सी की वैल्यू इसमें से 1 हो जाएगी और डी की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको चारों वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, ए बी सी एंड डी। ए इज इक्वल टू 28/3, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 9। तो वी विल चेक दी ऑप्शन बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज और देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो a इज इक्वल टू 28/3 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 1 है एंड d इज इक्वल टू 9। इट्स नॉट 3, इट्स 9। तो a तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि a इज इक्वल टू 27/6 है, b भी नहीं हो रहा है। अब सेकेंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं, a इज इक्वल टू 28/3, यस, b इज इक्वल टू 2, यस, एंड c प्लस d। तो c प्लस d इज 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, सो दिस इज करेक्ट। a plus b minus c is 31/3 and d is 9. Yes, d is 9. So this is correct. Now let's check for a plus b minus c. This is 28/3 plus 2 minus 1. और ये हो जाएगा आई थिंक 3 × 2 = 6, 34/3 minus 1. So it's yes 31/3. तो यानी कि ये भी करेक्ट है, डी। सो आंसर इज सी डी। ठीक है गाइस, आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ appreciate my effort, do subscribe, share, like, comment, और stay tuned, keep practicing, and okay, that's all from my side. Thank you so much, bye bye.